इफ यू आर समवन जिसके अंदर ऑडिट सब्जेक्ट का डर या फियर डेवलप हो गया है for CA inter or for CA final examinations, let me tell you the three key mistakes that you are doing in your preparations for CA inter or CA final auditing subject. This is coming from my experience of dealing with hundreds of students who have come to me to discuss about their subject study strategies. And if you are one of those students who has this fear and who is looking for the solution, stay here in the video till the end. Let me tell you what are those key mistakes and how you can resolve them. So hi everyone, this is CA Madhu Thakuria. I am here to tell you the three key mistakes that you do while preparing for the subject of auditing, whether in your CA inter level or your CA final level. I can tell you those three mistakes based on my experience of dealing with a lot of students during my mentoring journey. And also, this is the mistake that I used to do while I was preparing for my exams. And I took a lot of time to understand the mistakes I was doing and how I can resolve them. Your first key mistake is to think that audit is a theoretical subject. Yes, you all think that audit is a theoretical subject. That is why while you are reading, while you starting to study audit as a subject, आप पहले से ही बहुत ही नेगेटिव नोशंस के साथ में उसको पढ़ने के लिए जा रहे हो, थिंकिंग कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ये थ्योरी पढ़ने के लिए बोर होगा, ये थ्योरी लर्न करके या रट्टा करके हमको जाना पड़ेगा, and you end up wasting a lot of time, preparing in with that kind of mindset. Guys, let me tell you, audit is the most practicable subject, and for most of you, audit as a as a field is going to become part of your professional career. It has that immense power, but you need to understand that if you are going to become an auditor and if you are going to choose a field of audit, you need to perform whatever is given in your audit subject or module. You need to perform that practically. You will actually have to go to a client office, talk to them, inquire them, get to understand the business, and आपको actually वहां पर उनके एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, वहां पर जाके उनका सिस्टम चेकिंग करना पड़ेगा, या वहां पर उनका ऑडिट कंक्लूड करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ती है. So please do not think that audit is a boring theoretical subject. It is the most practicable one. One more reason I will give you: the standards on auditing that institute has prepared or the ICI council has given to you. It is a roadmap, it is a guideline that they have given to you कि ऑडिट शुरू होने से लेकर ऑडिट खत्म होने तक एंड नेक्स्ट ऑडिट की प्लानिंग तक ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें हाउ यू नीड टू बिहेव, व्हाट यू नीड टू डू, उसका एक रोड मैप दिया है. सो इट इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. प्लीज रिमूव दिस mindset and you will be halfway there towards your success. Another key mistakes students do, that they want to understand audit as a subject in a very simplified language. All right, you want somebody to teach you the subject in a simplified manner so that you can understand it. Guys, please understand, can you provide your report to the government और टू द स्टैट्यूटरी बॉडीज जिन्होंने आपको एज ए ऑडिटर ऑडिट करने का पावर दिया है, एंड यू हैव सम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म ऑडिट? कैन यू एक्चुअली prepare your report and submit to the government department or submit to any statutory body in a simple language, in a layman language? Have you ever seen government के documents कैसे दिखते हैं? What kind of language that is used over there? So understand करो audit को easy manner में. But please do not try to write in a layman language. You think that understanding, you take classes
from faculties, or you try to understand, even if from the free sources or from on your own, you try to understand in a easy manner, or you also want to produce in a very simplified manner in your answer books. You know, आप क्या करते हो ना, आप उसमें शब्दों के साथ खेल जाते हो. The key terms and the key words or the sentences used in standards on auditing, while you present in your answer, you do not take care of that. Trust me, when you will be on part of that side of the table, where you will be a chartered accountant and you will be our auditor, or you are sitting in any government body. If somebody present any document to you, ऑडिट रिलेटेड, वो ऑडिट का आपका वर्किंग पेपर हो गया, ऑडिट का रिपोर्ट हो गया, इन द काइंड ऑफ मैनर जिसमें आज आप आंसर्स लिख रहे हो, यू विल नॉट इवन स्पेंड लाइक 5 seconds रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट. क्रक्स क्या है होल थिंग्स का? ऑडिट सिंप्लीफाइड मैनर में समझो, लेकिन वो समझने के बाद में यू शुड बी एबल टू कोरिलेट दैट सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग जो आपने अभी ली है विथ द लैंग्वेज दैट इज गिवन इन द बुक. अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आपके सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग को आपके बुक्स में जो मॉडल में जो लैंग्वेज लिखा है उसके साथ में आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपने किसी भी फैकल्टी से क्लास ली होगी, ट्रस्ट मी, वो आपका वेस्ट चला जाएगा. You will need to learn and understand the language given in your books, and this is not for just audit subject. Trust me, this also applies in your strategic management, this also applied for your law. आप इमेजिन करो, लॉयर जो इतना लिटिगेशंस का काम करते हैं, लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपको एक सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ का इन योर सीए इंटर्स गाइस, इफ यू मेस विद द वर्ड, द काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द लीगल टर्म्स और द लीगल फील्ड, you can't do that. You have got 1 or 2 subjects like that. प्लीज इंश्योर ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं चलता है, दैट यू कैन प्रेजेंट, यू आर नॉट राइटिंग योर अ पोस्ट ऑन अ इंस्टाग्राम, अ पोस्ट ऑन अ लिंक्डइन. When you are writing answers, you are presenting it to someone, based on some regulations. ठीक है? So please correct this mistake. Third, most important, you do not read audit from a key point of view कि इससे क्वेश्चंस क्या बनेगा. क्वेश्चंस आंसर्स पे आपका फोकस नहीं रहता है. You try to read audit as a story. Okay, fine, you want to read audit as a story and read that story. But think for a moment, what kind of questions will come from that story? And can you answer that? वो पार्ट आपके स्टडी से ही मिसिंग रहता है. I have seen teachers teaching you the concept, the entire chapter. But what kind of questions will come in the exam? वो आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, उस पर फोकस नहीं करोगे, तो एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस आने वाले हैं. प्लीज ध्यान रखिए, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू स्टडी ऑडिट, फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, व्हाटएवर टॉपिक यू स्टडी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक भी पढ़ा, उसके अंदर ओके ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट कैसे करते हैं, क्या की एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट प्लानिंग के. इस तरह से बोल बोल के पढ़ना है आपको. व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, बोल बोल के पढ़ना है, ताकि जब आपको क्वेश्चंस आए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके उस पूरे कंसेप्ट में से किस पार्ट से क्वेश्चन आया है. That segregation, that compartmentalization is not there in your mind. You are just mugging everything, आप कैसा पोर कर रहे हो ज्ञान को, उस तरह से आप सुनते हो ऑडिट. दिस विल नॉट वर्क, ट्रस्ट मी. ये मिस्टेक अभी तक आप करते आए हो तो प्लीज करेक्ट करो. आपको ये चीज इजीली आप कंसेप्ट पढ़ करके इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में उसको अप्लाई करके, बेसिकली आपके मॉड्यूल के लैंग्वेज में आंसर करने के लिए वेरी इजी वे में, ट्राई टू सी सम ऑफ माय डेमो लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर ऑडिटिंग ऑन यूट्यूब. यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ आई टीच. आई ट्राई टू टीच यू, ओके ये कंसेप्ट है, ये पर्टिकुलर ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ये पॉइंट्स हैं, this is how you should make an strategy, these are the things or the factors you need to consider. उसके simplified में आपको real life based practical solutions बताती हूँ, practical way में कैसे किया जाता है वो बताती हूँ, because I have 13+ years of experience in the industry plus audit का experience है मेरे पास, तो मैं आपको practical समझाती हूँ, and plus I tell you कि okay अब इससे related ये question आएगा तो how do you need to answer.
ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उसको मिस नहीं करें, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। जो 2 महीना आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए देते हो, उसी 2 महीने के अंदर यू कैन रीड द कंसेप्ट, यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स, एंड द वे you will in if you do this in the manner that I am saying, you will be able to recall or remember the concepts for a very long time. I'm not talking about you till your exams. So please, what the three mistakes that I have tried to tell you, this is the crux. And if you can understand these three things and implement in your studies, you will never fail. And I guarantee all of you, if you implement this, you will all gain more than 70 marks in your audit ka paper with this just three things. If you can improve on these three things, I guarantee you will get 70 plus marks in your exams. So please trust me on that. I have a lot of experiences, in terms of the practical experience into the industry. I have done all my studies as well, and CA inter may have scored 60 plus, CA final may I have scored nearly 70, nearly 60, sorry. I know what I am telling you is actually something that I have already applied. This is not coming from some random thoughts. Please apply these techniques in your study. Please try to correct the mistakes. In the end, I'll just tell you, I have recently started my batch for CA inter auditing. This is already started. Just go and see the demo lectures that I have put it on YouTube. You will learn how to study audit, how to remember the keywords, how to apply those keywords in the answer. I teach these techniques to my students, how to apply those keywords and key sentences ka writing kaisa hona chahiye. After I teach them the concepts. So if you are missing any of these points anywhere in your preparation and you feel like taking the classes, try out my classes. I am taking the responsibility to make sure that you score the best from your capabilities, and I will make sure that audit become one of that subject in your group that will help you clear the entire group the way it did for me. And it should not be the subject जहां पर आप सिर्फ hope करो भाई 40 आ जाए, किसी तरह से 40 आ जाए. No. It is the most practical subject. You are going to have your entire career based out of this subject. Please take this seriously. Please know that it is possible that you understand in a simplified manner, but you need to apply the subject in a technical manner the way it is given in your module. वहां पर आप word play नहीं कर सकते. So if these things are clear to you, you don't need any other thing. All right. If you choose to enroll for my classes after you have seen the demo lectures, I will leave the link of my classes registration form in the description. Please go through that. If you feel like enroll for the classes and let me know that you have enrolled. Whatever may be your backlogs, for example, currently we are doing the chapter 2, chapter 1 is already done, it is already on your YouTube. Just in case you enroll now and chapter 2 is already done in a day or two, I will make sure कि आपका backlog आपका cover हो जाए. I will teach you again during the weekend का time लेकर के, या फिर coming days में हम cover कर लेंगे. So from that angle, at least मैं तो आपको assure कर सकती हूँ कि boss पास तो आप बहुत तगड़े से हो जाओगे. बट ये जो मिस्टेक्स है ना, इवन इफ यू डोंट टेक माई क्लासेस, प्लीज ये की मिस्टेक्स दैट थिंकिंग दैट ऑडिट इज अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट और इसको ज्ञान की तरह पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इट, ये माइंडसेट हटा दो. ऑडिट इज योर मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ट्रस्ट मी, यू विल अर्न सो मच ऑफ मनी बेस्ड ऑन दिस प्रोफेशन. ये आपका रोजी रोटी वाला सवाल है. टेक दिस सीरियसली. Audit is your most practicable subject. You will have your day and night spent on this field. Think when you study audit, think from that point of view, and you will love the subject. You will love it. Trust me. Second mistake, Bison, आप टेक्निकल वे में प्रेजेंट करेंगे आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स के थर्ड मिस्टेक में मैंने आपको बोला क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे एंड उसको अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट से, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ये आएगा तो उसमें मुझे यही आंसर करना है. ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दैट. देयर इज नो पॉइंट सफरिंग इन द एंड और जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन. Implement these solutions now only and you will see the difference in your preparation. That's all I had to say on this.
Thank you so much for watching if you have watched till here, and I hope to see you in the classes if you are enrolling. If even if you are not, I wish all the best to all of you. Start paying attention to your studies, follow your schedules every day, feel content. जब सोने जा रहे हो ना, सुकून की नींद सो, और वो सुकून की नींद लेने के लिए it's very important that whatever target you have given to yourself for the day, you are achieving it. That's all I had to say to all of you. Have a nice rest of the day. This is CA Madhu Thakuria signing off. Bye everyone.